participant is here. So I am starting the class. Okay. So I welcome all of you in this new chapter, and a very important chapter, not only for clinician but for academic point of view. And we have a lot of case of intestinal obstruction here. Most of the cases are referred from the different region of Bihar, and they come here for treatment. इस तरह के केसेस बहुत हैं हम लोग के पास, और हम पूरे बिहार से केस रिफर होकर के आता है यहाँ पे, जिसमें कि हम सस्पेक्ट करते हैं कि एबोमेसल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। जैसा कि हमें पता है कि एबोमेसम एक ट्रू स्टोमक है, एक तरह से वी कैन कंपेयर दिस एबोमेसम विद द स्टोमक ऑफ मोनोगैस्ट्रिक एनिमल। उससे हम तुलना करते हैं क्योंकि इसमें ही मेजर फाइनल फोर्थ पार्ट ऑफ द फोर स्टोमक है, and we see that the pH of this abomasum is acidic in nature. So rumen, reticulum, omasum, and abomasum. So abomasum is the fourth part of the GI tract of the ruminants of the stomach, and we call it as we call it the stomach also of the ruminants. And this abomasum plays a very, very important role, especially at the time of parturition, जिस समय गाय बच्चा गर्भवती होती है, और that is in advanced stage। मतलब कि हम लोग ने जो केसेस यहाँ पे देखा है, जो इसमें जो हिस्ट्री बताता है, इसका रिलेशनशिप है, मेटाबॉलिक डिजीज से रिलेशनशिप है। मतलब कि डेफिशिएंसी डिजीज, फॉर एग्जांपल कैल्शियम की डेफिशिएंसी, फास्फोरस का डेफिशिएंसी, एनर्जी का डेफिशिएंसी। इसके साथ साथ जो एक और चैप्टर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ब्लोट। ब्लोट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है रूमिनेंट्स के लिए, खास करके जो कि लेग्यूम्स पास्चर्स खिलाते हैं या एक्सेसिव ग्रेन खिलाते हैं, जिससे आप एसिडोसिस के बारे में भी जाने हैं। वहां पर भी अगर फ्रोदी ब्लॉट हो रहा है या फ्री ग्रास ब्लोट हो रहा है, सिमिलरली इफ द ब्लोट इज ऑकरिंग इन द एबोमेसम, ओके। सो जनरली ब्लोट वी डिस्कस द ब्लोट इन द र्यूमेन। र्यूमेन में अगर एक्सेसिव गैस का एक्यूमुलेशन हो जाए तो हम उसको बोलते हैं कि दिस इज ए केस ऑफ ब्लोट, जिसको हम अफरा बोल सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में। लेकिन अगर किसी कारण से एबोमेसम में गैस का एक्यूमुलेशन हो जाए, जस्ट लाइक ए मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स, और एटोनी हो जाए, हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं। एटोनी कहने का मतलब कि जो जीआई ट्रैक्ट का मोर्टेलिटी होता है किसी कारण से, कारण क्या हो सकता है? कैल्शियम की डिफिशियंसी हो सकती है, एनिमल एग्जॉस्ट हो जाता है, मसल का एक्टिविटी नहीं होता है, मस्कुलर मूवमेंट नहीं होता है, तो उस समय जो मूवमेंट, जो ऑर्गन अपने जगह पे होना चाहिए, उस जगह से गैस भर जाने के कारण वो अपने जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा। अभी हम लोग इसको हम इस मोड में देखेंगे कि कैसे एबोमेसम डिस्प्लेस करता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज एंड इट गिव्स सिम्टम्स लाइक जीआई ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ओके। जैसा ऐसा सिम्टम आपको मिलेगा, ऑनर विल कंप्लेन, ऑनर आपको कंप्लेन करेगा कि सर हमारी गाय पिछले 5-6 दिनों से स्टूल पास नहीं कर पाया है, गोबर नहीं कर रही है। So this is really a challenging job for any veterinarian. If you are in a field condition, then it becomes really a cumbersome. It becomes a difficult task because you have to diagnose the case. And here we will discuss how we can diagnose a case of intussusception, a case of volvulus, a case of abomasum displacement with other types of obstructive disorder. So coming back to the main thing, this abomasum displacement, as the name indicate, is the displacement. Huh? Just a second. Mucin gel. So this displacement, as the name indicate, means displacement of abomasum. As the name indicate, जैसा ही नाम बताता है, displace हो जाता है अपने जगह से। जो अभी हम एक एनाटॉमी देखेंगे, एनाटॉमी में एक abomasum का जो पोजीशन होगा, वहां से हट करके किसी दूसरे जगह में चला जाना और फिर ट्रैप हो जाना, फंस जाना उसमें, is called abomasum displacement. Now इसमें दो important type of displacement है. First is LDA and the second is RDA. Now the first one is very very common.
and the 70 to 80% cases of abomasum displacement are LDA in nature. That is left side displacement of abomasum. And the rare one, really, it is comparable to intestinal obstruction is the RDA, right side displacement of abomasum. So there are two types of abomasum displacement. दो तरह का abomasum displacement है. पहला left side of displacement है और दूसरा right side of displacement है. Now ये एक जस्ट आपके एंजॉयमेंट के लिए मैंने लगाया है कि क्यों ऐसा होगा, कैटल क्यों एलडीए और आरडीए से सफर करते हैं, एंड व्हाट आर द etiology, what are the predisposing factor. The most important thing in this disease is the predisposing factor. बहुत सारे ऐसे predisposing factor है जिसके कारण सारे गायों में नहीं होंगी. For example, you can take adult lactating dairy cattle. So this is one of the disease of a dairy cattle, means जहां दूध का प्रोडक्शन ज्यादा वहां बीमारी होने की संभावना ज्यादा. अभी हम लोग में थर्ड यूनिट में जब आपको हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पढ़ाएंगे तो बहुत सारी बातों पे चर्चा करेंगे. So adult why I'm talking about the disease of adult, because as the cattle age grows, its deficiency disease increases. So and is a production problem. The third point is a production problem. Means if a cattle is producing large amount of milk, and then they are more prone to suffer from this type of displacement disorder. So production is a relationship. So this type of question may be asked in the true and false and other type. So this disease is related with the production disease. We will discuss production disease in a special manner. There are long list of production diseases. So it has a correlation with the production disease like the ketosis, like the calcium deficiency, milk fever, and it is related with the nutrition. So nutrition is very, very important, because when the nutrition level is sometimes is difficult and you change the diet. So sometime when you change the diet of the cattle, fermentation has started and accumulation of gas has started in the rumen, reticulum, omission, and abomasum, and in that condition it is related. So if the animal is getting finely grounded grains, अभी आपको पढ़ाई हुआ होगा एसिडोसिस में, जिसमें प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स के बारे में अगर चर्चा हुई होगी, तो मोटे अनाज की तुलना में अगर फाइनली ग्राउंडेड ग्रेन्स खिलाते हैं, दैट हैज अ मोर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गैस, okay, because they are mucilaginous in nature. So nutrition is very, very important, and sometimes majority of abomasum displacement are concurrent finding. मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि कोई दूसरी बीमारी को देख रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है. Now, as we are discussing that it is related with the production disease, it may be related with the reproductive diseases. So age is very, very important. Now, as the cattle grows, its capacity to absorb ions from the GI tract as well as from their bone decreases, means the receptors decreases. So it's generally a disease of older cattle, means the cattle that are after third to fourth lactation, so generally used to suffer from this disease. And now timing is very, very important. Just to keep in mind when we will teach the metabolic diseases like the milk fever, like the post-parturian hemoglobinuria, like the ketosis, they are related with deficiency, and most of the deficiency occurs when the cattle are in great demand of energy or in great demand of calcium, phosphorus, or the different types of ions, either macro and micro minerals. So during the time of parturition, they require a huge amount of energy, they require a huge amount of calcium and phosphorus. So not only to maintain the fetus, but to maintain the lactation. So 80% cases occur during the first month of after parturition. So this is a very, very dangerous period. And this is a dangerous period not only for the milk fever, it is a dangerous period for the PPH, is a very important disease. It's a dangerous period for the displacement of abomasum, and sometimes it is found during at the time of parturition, just before the parturition also. Sometimes some deficiency develops in a very, very high lactating cattle. And also, as I talked just now, that it is related with the nutrition. So if the cattle are getting more grains, if they for more increase in milk production, so they usually suffer from this type of disorder because of the inadequate fiber in their diet. So fiber की कमी से जो हम लोग आजकल हम लोग भी बात करते हैं कि फाइब्रस डाइट खाना चाहिए, उसी तरह से अगर कैटल के न्यूट्रिशन में
फाइब्रस डाइट की कमी आएगी, मोर ग्रेन्स की तरफ जाएंगे, दे आर मोर प्रोन टू सफर फ्रॉम सच टाइप ऑफ डिजीजेस, दे आर मोर प्रोन टू सफर फ्रॉम एबोमेसम डिस्प्लेसमेंट. And because I just told that this is a triad. Triad means 1 2 3, 3 से को रिलेशनशिप है. पहला मेटाबॉलिक डिजीज से रिलेशनशिप है, दूसरा खुद का एक डिजीज है जिसको गैस के एक्यूमुलेशन से इसका मतलब है और एज फैक्टर है, और तीसरा इट इज रिलेटेड विद गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर. Now when we look as a whole, as a clinician, we see that retention of placenta, dystocia problem, deficiency disorder, especially the calcium deficiency and the energy deficiency, ROP, retention of placenta, and this abomasum displacements are correlated. So this is a big circle. So if the animal is prone from retention of placenta, if the animal is prone from dystocia, if the animal is prone from metritis or mastitis, if the animal is prone from milk fever, they are prone to suffer from this type of disease also, because they are all the diseases are correlated. So coming back again to the main thing, that is today we will discuss the LDA, that is left side displacement of abomasum. As the name indicates, the abomasum displaced to left side. I will show you in the figure through anatomical graphs how it is located in the GI tract. Again, we will revise that case. So it is generally associated with high concentrate diet, atony of rumen, and gas digestion. What the things but we have discussed now. Now I am just giving it a point-wise manner. High concentrate diet, atony of the rumen atony goes in certain condition. बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जिसमें रूमेन की मोर्टेलिटी घट जाती है. रूमेन की मोर्टेलिटी पे ही गैस का एक्यूमुलेशन एंड गैस का निकलना, इरेक्टेशन डिपेंड करता है. सो एटोनी ऑफ द रूमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द थर्ड इज डिस्टेंशन ऑफ द एबोमेसम. हमारे पास एक डायनेमिक ग्राफ मैंने लोड किया है पीपीटी पे, और वो आपको मैं दिखाऊंगा कि हाउ इट हैपेंस. सो यू सी this is the normal representation of reticulum is on the top side, and therefore one very important disease we will discuss is TRP, traumatic reticulopericarditis or peritonitis. Because there is a diaphragm at this region, if the animal is on this side, the first part of the forestomach you are getting is the reticulum. Okay, then rumen is on this side, on the left side. Rumen is here, that's the left paralumbar fossa, left paralumbar region on the left side of the stomach. Then this is abomasum, and on the lower side, that is towards the xiphoid region. On this region, if you see, you compare here, this is the, you see on this region, this is the lower body part, this is the ribs, and this is the region of abomasum. So just you note down how it will deviate. अगर यहाँ से ये हट के कहीं दूसरे जगह को चला जाएगा, लेफ्ट साइड को चला जाएगा, राइट साइड को चला जाएगा, और वहां पे ट्रैप हो जाना, मतलब कि इस तरह से स्ट्रैंगुलेट हो जाना, फंस जाना, this condition is called abomasal displacement. So we will discuss now through a dynamic diagram. So this is abomasum, you see here, this is the reticulum is the first part, and on the top, on the left paralumbar fossa, जो आप देखते हैं गाय खाना खा लेती है, गैस भर जाता है, ब्लोट की कंडीशन में पढ़ाया जाएगा कि बाएं तरफ का पेट फूल गया है, जो सबसे कॉमन कंडीशन है. रूमेन में गैस का accumulation is called bloat, but here we are dealing with this fourth part of the GI tract, and it will move now, and you will see here, this is a cross-sectional diagram we have seen. So 3 very big abomasal atony is there, increased abomasal gas production is there, and then it may leads to LDA or RDA, in which the LDA, left side displacement of abomasum, is a very common disease in case of a cattle. Generally 80% cases occur during the first part. So normal position you see just in a cross section. This is the right side and this is the left side. This is the major part of this forestomach is occupied by the rumen, and this is the roundish omasum part, and this is abomasum. And what happens when left side displacement abomasum occur? You see here, abomasum was here, but due to accumulation of gas, आपने दशहरा में वो लंबा वाला बैलून देखा होगा, बहुत कान दुख जाता है, उसको फुला नहीं सकते, वो साइकिल में हवा भरने वाले उससे फुलाया जाता है. अब देखेंगे इतना छोटा सा वो बैलून शुरू में रहता है, और जैसे जैसे हवा भरते हैं वो बैलून एक लंबा आकार लेते हुए खट से ऐसा निकल जाता है, लंबा सा. देखा है दशहरा में?
दशहरे में वो बिकता है, वो लंबा लंबा बड़ा बैलून, जस्ट लाइक ए सिमिलर यू कैन इमेजिन हियर, इट वाज हियर बट ड्यू टू इंट्रैपमेंट, बट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ गैस इट डिस्टेंड, और अपने जगह से ह्यूमन उसके जगह को रिप्लेस कर दिया है यहाँ पे, और जाके बेचारा फंस गया इस जगह पे लेफ्ट साइड में। ओके, तो अब ह्यूमन के ऊपर आ गया, वो लेफ्ट जगह पे होना चाहिए था ह्यूमन, इसमें गैस भरा, ह्यूमन में भी गैस भरा होगा, ह्यूमन उसके जगह पे आ गया, एबोमेसम उसके जगह पे चला गया। So this is left side displacement of abomasum you see here. Everyone is clear? ठीक है? Yes sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए कैसे इंट्रैप हो रहा है। इसी बेसिस पे अभी हम एक टेस्ट करेंगे। आपने ये पोजीशन देख लिया, एबोमेसम में देख लिया, वहां पे एबोमेसम अपने जगह से भाग रहा है, अपने जगह से जा रहा है और जाकर के कहीं पे फंस जाएगा। एंड इसी बेसिस पे हम इसका टेस्ट करेंगे। और so many diseases are correlated and the questions is being asked in examination regarding the clinical findings. Animal will show anorexia and ketosis. It has relationship with the ketosis. Ketosis is a very important disease of cattle, especially the dairy lactating cattle at the time of parturition in a negative energy balance. So if they suffer from negative energy balance, they remain in this. And very important question is being asked is the left slab-sided left lateral abdomen. So ऐसा लगेगा कि एक स्लैब रखा हुआ है, लकड़ी का स्लैब है, इस तरह का पेट है। Now we have to differentiate. We have to differentiate it from three important diseases. Although both are not taught to you, but just I am making a differentiation because I think some other teacher will take bloat, some other teacher will take vagus indigestion. But to make a comparison, so two very, very important disease. One I am talking that is bloat condition in which only the rumen will be elevated on the left side. Okay, बायां साइड में पेट फुल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं गैस हो गया है, ब्लोट हो गया है, bloated condition. That is a different type of phenomena in which बाएं तरफ अगर हम एक फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, कैटल को देखते हैं, तो वो बायां तरफ का पेट से फैला हुआ रहना। Now, second very important point is the disease called vagus indigestion. Okay, vagus is a nerve, that is a transcranial nerves, and vagus indigestion अगर कैटल में हो रहा है तो बहुत ही खराब prognosis है। In that condition, the animal is not going to recover, and it shows a very important classical sign of papal sepid abdomen. Okay, तो वो दोनों तरफ उसका एलिवेशन होगा। आप हमें वॉच करिए, एक लेफ्ट साइड में एलिवेशन होगा एब्डोमेन का और एक राइट साइड में एलिवेशन होगा नीचे की ओर। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, इफ यू कट ए दिस इज एप्पल और पियर, ये किसका शेप लिया हुआ है? ये ऐसा शेप सेब का होता है कि या पियर का होता है? जल्दी बताओ, ये सेब जैसा है या पियर जैसा है? सेब नीचे से बड़ा होता है या ऊपर से बड़ा होता है? सेब सेब तो ये नीचे ऊपर से बड़ा होता है। ऊपर से बड़ा होता है। अब ये सेब हो गया। ओके, पैपल को तोड़िए, पियर एंड एप्पल, मतलब अभी ऐसा पियर को अब देखेंगे तो ऊपर पतला नीचे मोटा, इसको आप काटिए दो भाग में, ऐसे काट दीजिए, ठीक है, हाफ पार्ट ले लीजिए। हमको आधा सेब खाना है, आधा पियर खाना है, ठीक है। मैंने पियर को आधा काट लिया, ये पियर को मैंने काट दिया, यहाँ से ऐसे काट दिया, आधा पियर निकाल दिया, आधा पियर रख दिया। अब हमको एक सेब लाते हैं। ओके, अब मैं सेब को काट देता हूं ऐसे। ओके, सेब को काट देते हैं ऐसे, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देते हैं। सो पैपल सेपेड एब्डोमेन, पैपल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, याद रखिएगा। एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैपल, व्हाट इज पैपल? It is just a combination of two words, just like a mottle. Mottle क्या होता है? एक mottle शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट।
दो शब्द से बना है, जोड़ करके। आजकल मिला देते हैं ना, दो नाम को मिला करके एक नाम बना देते हैं। मॉर्टल सब सुने हैं? नो सर। अरे आप नो लोग तो सर। घूमने जाते। समझिए आप कोरोना का अभी है और आपको ट्रेन पे नहीं जाना है, आपको फ्लाइट पे नहीं जाना है, किसी ने प्लान किया कि अभी हमें यहाँ से कहीं जाना है, घूमने जाना है, ठीक है, और वो लॉन्ग ड्राइव घूमने जाना है। कितना दूर भाई? तो 500 600 या 800 किलोमीटर। आप एक दिन में नहीं पहुंच सकते, हो सकता है 2 दिन में आपको आपने प्लान किया है, आप फैमिली के साथ कार में जा रहे हैं, तो आपको कहीं स्टे करना पड़ सकता है। रात में रुकते हैं ना कहीं पे, बीच में कोई ऐसे जगह पे रुकते हैं जो बहुत सेफ हो, जहाँ पे कार लगाने की व्यवस्था हो और सेफ्टी हो, वहां पे आप रहें। सो दैट इज ए मॉर्टल, दैट इज नॉट ए होटल। A hotel in which there is a facility to keep your own car. आप रात में गाड़ी लगा दीजिए, आप रूम ले लीजिए, रुक जाइए, सुबह उठिए, फिर चलिए। So it is a combination bird. मैं जस्ट ये का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आप इस सब को समझें और इसको आगे यूज करें। तो यहाँ पे इसका जो एब्डोमेन का शेप होगा वो पैपल सेपेड होगा, और पैपल का निर्माण हुआ है दो शब्द से, एप्पल के शब्द से और पियर के शब्द से। दोनों को हाफ हाफ पोर्शन काट करके अगर हम जोड़ते हैं तो उस हिसाब से पैपल सेपेड एब्डोमेन दिखाई पड़ता है इन दिस डिजीज। सो यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस abomasal displacement, especially left side displacement of abomasum LDA from papal cepheid abdomen, in which both sides will be elevated, left side and the right side, lower right side will be elevated. So this is a papal cepheid abdomen. You have to differentiate it from bloat, in which only the left side of the abdomen is elevated. So two sides is there. So, and then the slab-sided abdomen is what we are going through, is the abomasal displacement, left side displacement of abomasum. Other method of diagnosis are on auscultation of abdomen, tinking and gurgling sounds are here responsive on the left side. वो क्योंकि वो गैस होगा वहां पे आप abomasum आ गया है तो उसमें गैस का साउंड जैसे कि स्टोमक से आता है. But the most important things that is again asked in question is ping on percussion. Now again a very, very important terminology, and I will take some time in dictating this. What is ping on percussion? Although this is a matter of practical also. आप टेबल टेनिस आपके हॉस्टल में होगा, आपने कभी बॉल का, उस पे जो बॉल गिरता है टेबल पे और उसका एक आवाज सुनाई दिया होगा आपको, सबने ऑब्जर्व किया है पिंग साउंड. टेबल टेनिस का बॉल को टेबल पे गिरने से जैसा आवाज सुनाई देना, जस्ट इमेजिन. या पेबल, एक ईंट को एक कुएं में ऐसे टपकाते हैं, एक पक से आवाज सुनाई पड़ता है. यू कैन कंपेयर, मैं अब आवाज अभी सुना नहीं सकता उस तरह से. तो दे आर दिस टाइप ऑफ साउंड, जस्ट इमेजिन इन माइंड. Simultaneous auscultation and percussion on the left paralumbar fossa, extending several inches cranially, yield a high-pitched resonant tympanic sound that is ping, is similar to a pebble dropped in a well. ठीक है, एक बड़ा सा लंबा सा लाइन लिखा हुआ है. I just want to clarify it. The sound that is heard like a table tennis ball, or the sound that is heard when you drop a pebble in a well, pick का एक साउंड जो सुनाई देगा, उस तरह का साउंड का अगर साइमल्टेशन एस्कल्टेशन करते हैं परकसन के बाद, मैंने अभी आप दिखाएंगे कौन से जगह पे आप करते हैं. So that is a disease. It's a very, very important. Ping on percussion is very important for left side displacement of abomasum. The other sign you will be getting is the melena and symptom of dehydration, because some animals can recover spontaneously. कभी-कभी LDA 50% मैं अभी उपाय बताऊंगा. Otherwise, it is required a surgical intervention. But being a man of medicine, आपको शुरू में आपको थेरेपी यूज करना होगा, आपको कुछ ऐसे मेथड यूज करने होंगे. तो यहाँ पे आप ऑनर जो कंप्लेन करेगा वो डार्क टैरी कलर्ड फीसेस आएंगे. ठीक है, आप when you go for the rectal examination, you will be not getting the feces, you will be getting the dark tarry अलकतरे की तरह उसका गोबर मिलेगा. That is called melena. It's a very, very important symptoms of GI tract bleeding also.
कभी हम differentiation करके. So this is a slab-sided abdomen. The picture you are visualizing. Just to remember it, I'm giving in the figure. There may be, you can examine it by rectal examination also. There will be mild colic, because when we talk about the RDA, that is a complete types of obstruction disorder. So RDA is a complete obstructive disorder. Here you will be getting a mild colic, mild hypocalcemia, hypotonic rumen. So these are some of the important other clinical findings, apart from all the what we have talked, the slab-sided abdomen in the LDA. So ping on percussion is again a very, very important sound. I have tried to put sound, but I'm not able to hear this. But I have given you an imagination what is ping on percussion and what is a ping sound. You can, when you come back here, you just drop a table tennis ball on a table and imagine the sound. Or when if you are in a village, you just drop a pebble in a well and hear the sound. That similar sounds are heard in case of left side displacement of Abomasum. In this region, you see what we are talking. If you draw imaginary line from here to here, and if you go for palpation, percussion, auscultation, we have told. So percussion and simultaneous auscultation. मैंने इसमें एक वाइब्रेशन दिया और उसके बाद सुनने से अगर LDA है, because this is the left side of the abdomen, and this left side of the abdomen is really filled by rumen, but due to displacement, the rumen is replaced here by abomasum, so it will give a characteristic sound of this ping on percussion. So this is the area, this is imaginary area. Just I have drawn an imaginary area here, and by on this region, if you go for simultaneous percussion and auscultation, you will be getting a sign of ping on percussion. You see here, this is the region I have shown. So this is the area, and then other method of diagnosis is, again, I have shown history and slab-sided, but there is a test called lip tap test. Okay, so just again, three very, very important things I have told: slab-sided abdomen, ping on percussion on the left side of the abdomen, and slab. And the last one is the test, is the lip tap test. This is nothing but a test of a fluid. Now, as a question, I am asking my student is lip tap test yaad hai na? So lip tap test, you might have seen, आपने देखा ही नहीं है. Rumen fluid collection आपने देखा है किसी ने? देखा है? No, sir. Rumen fluid का. Okay, चलिए आएंगे तो पहले rumen fluid का extraction हम लोग देखेंगे. अगर आप बाएं तरफ एक 16 गॉज का निडल डालते हैं और सिरिंज से खींचते हैं, तो आपको जो फ्लूइड मिलेगा स्ट्रॉ कलर्ड लगेगा कि भूसा का जो कलर्ड है वो that colored is a rumen fluid, okay, in a normal condition. And when you check the pH, अगर आप उसके pH को चेक करते हैं, it should be around, कितना rumen का pH होना चाहिए? 7.2. 6.8. 6.89. ओके, ठीक है. किसी ने 7.2 भी बोला है. इट डिपेंड्स अपॉन द डाइट. अगर ज्यादा लेगुमिनस फॉडर खा रहा है तो थोड़ा सा पीएच बढ़ जाएगा, ज्यादा ग्रेन डाइट खा रहा है तो थोड़ा सा पीएच घट जाएगा, बट इट शुड बी अराउंड 6.5, 6.8, इट मे बी 7, it may be 7.1. So this is the pH of a rumen. You people are knowing. But anyhow, if you want to diagnose whether this pH is 6.5, 6.8, or its pH is coming around 2, then it gives something is wrong. Because even in case of acidosis, you might have heard, you might have learned in the previous class of Dr. Bipin sir, in which he might have studied that the rumen pH goes down. But how much it goes down? It goes down up to 4, up to 5. Okay, that is called acidosis, because it is very, very difficult to convert the pH of the rumen from 7 to 2. So 2 pH is generally found in the normal condition of abomasum. हमारा GI tract है, मोनोगैस्ट्रिक एनिमल कोई भी है, उसके स्टोमक का pH एसिडिक इन नेचर होते हैं because of the hydrofluoric acid.
So because this abomasum is acidic in nature for protein digestion, the pH is around 2. So if you are collecting a fluid from the left region and you are examining the pH and you are getting around 2, it's give a conclusion. And other history and the left side abdomen, the ping on percussion, other physical method, the other history are telling, and you are going for this examinations, it gives a conclusion that this is a left side displacement of abomasum. So this is one of the diagnosis of LDA by checking the pH of the left side region by collecting the fluid, because in a normal condition, if the abomasum is not in this region, the fluid that you have collected is collected from the rumen, not from the abomasum. So in that condition, it gives a very clear-cut idea. So again, I am stressing here for examination point of view, the lip tap test. Just keep in mind this question will come. Okay, so lip tap test, and lip tap test. Left-sided abomasum, slab-sided abomasum, papal-sepid abomasum in case of vagus indigestion, elevation only on the left side in case of blood. So these are the differential diagnosis. Okay, so these are the differential diagnosis. Now coming back, being a clinician, if you are diagnosing a case and not giving any treatment, there is no need of being a specialized in veterinary medicine, veterinary surgery, and veterinary gynecology. Some of our students are very well in theory, but when comes the case, very difficult, because they have not analyzed it through theory and practical. Because whatever I am teaching is not you are going to get tomorrow, you are going to get that case. Okay, so you have to just keep in mind such type of cases, differential diagnosis you have to do in a field condition. So if you are suspecting it, if you are diagnosing it through per rectal examination, through left-sided displacement of abomasum, clinical characteristic, examination of the fluid what you have collected from that region, so you may start the treatment. And this treatment sometime 50 to 60% is successful, because if lastly it required a surgical intervention if it is a recurrent, and if you are not able to remove that abomasum that is trapped on the left side to its normal position by removing the gas. So whatever you have to do, as I told that there is a chance of atonia of the rumen, so you have to increase the mortality of the rumen so that the rumen come back to its original position. So for that, you have to give some calcium therapy. As we know, the calcium is very, very important for muscular activity. So calcium therapy is very, very important. Saline cathartics you have to use. You have to remove the feces and everything from that region. But keep in mind, yeah, never use a cathartic, never use a purgative when you are suspecting a case of obstruction. ये सबसे बड़ा गलती हो जाता है। और गांव से और फील्ड कंडीशन से जो केसेस रिफर्ड होते हैं अपने कॉलेज में, खास करके दो कंडीशन, एक यूरिनरी रिटेंशन का, पेशाब के रुकने का, और स्टूल नहीं पास होने का, और कभी-कभी जबरदस्ती स्टूल कराया जाता है without diagnosing. It may be a case of obstruction, complete obstruction GI tract, because it gives a mimicry like symptom. So in that condition, there is always a chance of rupture of the GI tract. Suppose ये पाइप है और यहाँ पे पाइप ऐसे पानी पटाने का पाइप है, ये मुड़ा हुआ है, और आप यहाँ से पूरा नल का प्रेशर फोर्स लगा दे रहे हैं, चाहे तो ये खुलेगा या चाहे यहाँ से फट जाएगा. So in that condition, you have to use some mild purgatives. You have to use some lubricant so that वो चिकना हो जाए, गैस उसमें उसके मसल्स में पावर हो जाए, वो अपने आप अपनी जगह को लौट जाए. So these are some of the precautions. And then the conservative method of treatment. Generally in medicine, 60 to 70% cases we use to treat it with this method. Rolling the cow, okay? Rolling the cow, violent exercise, and transportation over bumpy roads. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है. मैंने यहाँ पे इससे सफलता पाई है और मेरा पीजी स्टूडेंट उधर मुस्कुरा रहा है. ये ट्रीटमेंट को फॉलो कर रहा है. जब भी ऑब्स्ट्रक्शन का ऐसे केसेस आते हैं, हम लोग पहले उसको फ्लूइड थेरेपी करते हैं. आप बोलेंगे सर पेट में फंसा हुआ है, गैस भरा हुआ है और आप फ्लूइड थेरेपी कर रहे हैं. फ्लूइड थेरेपी इसलिए कर रहे हैं, कैल्शियम थेरेपी इसलिए करते हैं ताकि उसके मसल्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाए,
उसका मसल जो स्थिर हो गया है, शिथिल हो गया है, उसमें हम एक्टिविटी लाना चाहते हैं। और उसके बाद फ्लूइड थेरेपी करने के बाद हम उसको चाहेंगे कि उसको खेत में चला दीजिए।